दुकान 150 और 200, नॉट मोर देन दैट. क्यूट शूज़ मिले मुझे. डू यू नो हाउ मच दीज कॉस्ट? जहाँ से मैंने शूज़ खरीदा, इट्स कॉल्ड. हाय, today it's going to be a clothing haul. You don't know how much this means to me. You don't know how excited I am for this haul, because clothing hauls are something I have watched since I started watching YouTube myself. So, and it's something I still love watching. So me doing a clothing haul on YouTube is like living my childhood dream. So yeah, it's very exciting. And this haul is going to be from Fancy Bazaar, and I went with my mom and Masi, and we shopped quite a lot. I shopped quite a lot with my own money. You know, this is a flex. I'll tell you why this is a flex, because this is the first time I'm getting paid. Like, this is like my first job. You know, it's not a lot of money. It feels so nice to shop with my own money and not feel guilty about like making mom pay for all of these things, you know. So yeah, so I'm going to show you what I bought, but I did not vlog the experience because there's already plenty of vlogs on Fancy Bazaar on YouTube. I thought that it would just be very repetitive. So most of my purchases are from those, वो फुटपाथ में जो पड़ा होता है ऐसे, मतलब 100-200 का वो वाला है. I think 2 of them are from like proper shops, and I have footwear. I love my footwear. I am not usually a footwear person. I'm more of a clothing, like kapra person. But बहुत cute shoes मिले मुझे, तो I'm very excited to show you guys. So मैं वैसे भी मेरे इंट्रोज बहुत लंबे कर देती हूँ, और अभी भी लंबा हो ही गया होगा. तो let's get started. Oh, by the way, it's 10:15, right, 17 right now, PM. This is me filming after I came back from Fancy Bazaar, and I'm so tired. I probably look very tired, but this is the level of my excitement. So let's get started. Okay, the first thing is this top. I think थोड़ा सा स्टिच करके मतलब ऑल्टर करना पड़ेगा मेरे लिए, because it looks slightly bigger for me. यहाँ पे लेस डिटेलिंग है. There's a cute bow here. I mean, it's a really cute top, and it's super trendy. Like, lace and this whole style of the top is very trendy. So this was for 150 or 200, not more than that. So हाँ, ये फुटपाथ वाला शॉप से लिया है. The second purchase from that same shop, जहाँ से मैंने ये ख़रीदा है, is this orange shrug thingy. It's यहाँ पे खुद से सेल्फ प्रिंट टाइप का कुछ है, and it's a tie-up thing situation, and yeah, very cute. I do not really own a lot of orange clothes, so this would be me stepping out of my comfort zone. You know, my mom was like, आरू की मन किनिबा, मतलब और कितना खरीदोगे, बहुत हो गया. But thank God I took my Mossi with me, because she was very encouraging. She was like, you want this, buy, it's okay, buy. And then अगर कुछ चीज़ थोड़ा expensive लग रहा था for the quality, तब भी my mom was like very skeptical. And then my Mossi, and then we would come out of the shop, and then my Mossi would be like, if you really want it, you should just buy it, you know. And I'm like, yeah, you're right, I'm going to buy it. So I go back. So yeah, I think I'm gonna take my Mossi along every time I shop now. So yeah, the next top, this one I definitely have to alter because this looks big. But this is a very summer, घर पे पहनो, थोड़ा कॉफ़ी के लिए जा रहे हो, दोस्तों के साथ तब पहनो, वैसा टाइप का टॉप. It's not very fancy, but I love stripe. You know, I love stripe. I'm obsessed with stripes. So I got this striped top, and इसका ये कितना सुंदर है, flower detail. And this is the back. Fancy Bazaar is the Sarojini Nagar of Guwahati. Just for context, जो यहाँ से नहीं है, तो बट सरोजनी में तो 30 रुपीज़ में भी कपड़ा मिल जाता है. फैंसी बाज़ार में उतना भी चीप नहीं है. बट या, आई होप in the coming years it becomes even cheaper so that I can thrift even more. So ये सारे pieces मैं बोलूँगी ये thrifted है, because ये वाली वो फुटपाथ वाले दुकान से लिया है मैंने. So this is also 150 or 200 rupees. Then जो 100 वाले हैं वहाँ से
I bought this top. This is a very, ये पीस मेरी मम्मी और मेरी मौसी को नहीं पसंद आ रहा था, बट आवाज़ शायद आपको आया होगा. एनीवे ये पसंद नहीं आया था, बट मुझे छोड़ना नहीं था बिकॉज आई रियली लव दिस डिटेल. यू सी लाइक ये ऐसे साइड में आके, समझा नहीं पा रही हूँ मैं, बट या आई रियली लाइक इट. And this is also see-through, by the way. Like, I'll have to wear something underneath it, but this is for 100. Then this is another shrug I bought from the 100 wala dukan. This is really pretty. Like, the color is beautiful, the material, the length, everything. My mom and Mossy approved because it's also blue. It's their favorite color. So yeah, it's for 100. फिर मैंने एक स्कर्ट ख़रीदा. मैं शॉपिंग जाऊँ और मैं स्कर्ट ना ख़रीदूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता. तो आई बॉट स्कर्ट, a maxi skirt. This was for 200. It's really pretty. It's like blue with white and then ऐसा tiered है नीचे तक. Yeah, very pretty. So I have a lot of clothes which are of this combination, which is blue and white, and I have actually promised myself I won't buy anything of the same color combination again, because मेरी jewelry, मेरे कपड़े, I have a lot of blue and white. But weakness है शायद मेरा ये, because I love that combination. It looks so good, especially Indian wear में blue and white looks amazing, right? फिर या सो ये दो जो परचेज है ये थोड़े एक्सपेंसिव साइड में होगा, बिकॉज एक्सपेंसिव कंपेयर टू दीज, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रॉपर शॉप से ख़रीदा और मुझे चाहिए था ये दोनों, बिकॉज मुझे ऑफिस में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है, लाइक प्रॉपर लाइक टॉप्स वगैरह नहीं है. तो आई बॉट दिस शर्ट. इट लुक्स वाइट, ऑलमोस्ट बेज ऑन कैमरा, बट इट्स एक्चुअली वेरी 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 पतला पिंक. So the material is very breathable. The button is really cute, look. But baki ka is normal, and this is how it looks. It's like a normal shirt to wear to office. This was for 400 rupees. सरोजनी में ये भी मुझे 100 रुपये में मिल जाता. Wow, my hair looks really short. मैंने नहीं काटा है बाल, है मेरे पास अभी भी. Yeah, तो after that I bought this top. It's very cute summer top. बस ये वाला भी 400 रुपीज़ का था. एंड फुटवेयर, अब मैं तुमको फुटवेयर दिखाऊंगी. I'm so excited about them. First pair is this. So cute, right? Do you know how much these cost? They were gifted to me by my Masi only. बिहू गिफ्ट, थोड़ा सा लेट क्योंकि मैं नहीं थी ना बिहू में. तो थैंक यू मासी. फिर आई थिंक दीज आर माई फेवरेट. एक्चुअली नो, आई कांट चूज. ऑल ऑफ देम आर माई फेवरेट. अ सिल्वर पेयर, एडोरेबल, क्यूट, एडोरेबल, अमेजिंग. बकल इसमें भी है. यू नो, फनी थिंग इज़ आई हैव नेवर रियली वोर्न शूज़ लाइक दिस. मतलब मैं मोस्टली जुत्तीज़ पहनती हूँ, एंड जो जुत्तीज़, कोल्हापुरीज, दीज आर द काइंड ऑफ शूज़ आई मोस्टली वेयर, एंड वैसे शूज़ ही मैं ओन भी करती हूँ. तो मेरे लिए ये स्टाइल पहनना, बेले फ्लैट्स टाइप का या फिर पम्प शू हो गया, इट्स समथिंग वेरी न्यू. तो लेट्स सी इफ़ आई फील कंफर्टेबल इन देम, बिकॉज जुत्तीज़ में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. तो बट आई मिस आउट ऑन क्यूट स्टफ लाइक दिस. सो एंड द लास्ट पेयर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. Oh my god, it looks beautiful on camera. Wow. इसमें भी बकल डिटेल है. These are all for 200 each. Can you believe it?
gratitude to all the YouTube girlies who make vlogs of Fancy Bazaar, because they were the ones जिनके वजह से मुझे ये वाला मार्केट मिला जहाँ से मैंने शूज़ खरीदा. इट्स कॉल्ड तालुकदार मार्केट. आप लोग फैंसी बाज़ार में अगर जाते हो देन यू कैन जस्ट आस्क अराउंड, दे विल शो यू द वे. एंड इट्स लाइक अ शू हेवन बिकॉज देयर so many stores there, but the first shoe store is the one where I bought all of these. होलसेल मार्केट है इसलिए बहुत कम में मिल जाता है, बट ऑल्सो द स्टाफ देयर इज़ अ लिटिल रूड. आई मीन आई थिंक दे जस्ट डोंट केयर बिकॉज होलसेल वाला मार्केट है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा. बट यू नो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, गेट द शूज़ यू वॉन्ट. Only thing that matters is getting cute footwear. I had not expected to buy so much, but a girl's gotta do what a girl's gotta do. Okay, yeah, so I think it's done. I'm done. This is like a very short video, but ठीक है, हो गया. This is something I have wanted to do. It's like a dream come true for me, making hauls. It's so fun. I hope you had fun watching, and if you go to Fancy Bazaar, shop till you drop, I guess. ठीक है, bye.